हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। हमारे आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे द प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। सो हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि किस तरह से हम एक जीन से प्रोटीन तक जाते हैं, हाउ वी परफॉर्म और द बैक्टीरिया परफॉर्म द ट्रांसक्रिप्शन एंड देन ट्रांसलेशन टू मेक प्रोटीन्स। और हम लोगों ने उस प्रोटीन को उस बैक्टीरिया में से निकाला बाय यूजिंग डिफरेंट बायोकेमिकल टेक्निक्स। और आज हमने ये देखना है कि हमने किस तरह से उस प्रोटीन को जो कि हमने निकाला है उसको किस तरह से बाकी प्रोटीन से प्योर करना है। बिकॉज अब लेट्स सपोज इफ इट्स बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल आई एम गोना ड्रॉ इट हियर। अगर हमारे पास एक बैक्टीरिया है और हमारी उसके अंदर प्रोटीन है दैट इज प्रोटीन एक्स, तो हमने उसमें से जो प्रोटीन को उसको लाइज किया सेल को, हमने ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हम इसको इसके सेल मेम्ब्रेन को सेल वॉल को लाइज करें तो प्रोटीन सारी बाहर आ जाएगी। इसके साथ और भी बहुत सारी बैक्टीरिया की प्रोटीन्स आएंगी, लेट्स से इट इज प्रोटीन ए, इट कुड बी प्रोटीन बी, प्रोटीन सी। अब हमारी प्रोटीन और ये सब प्रोटीन तो एक कह लें कि एक मिक्सचर में, तो हमने अपनी प्रोटीन एक्स को बाहर निकालना है। सो टू डू दैट वी हैव टू हैव सम स्पेसिफिक मैग्नेट और मैग्नेट लाइक टैग, जिससे हम क्या करें कि हम इस प्रोटीन को बाकी सबसे सेपरेट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हमारी प्रोटीन इज समहाउ मेटालिक और बाकी सारे नॉन मेटल्स हैं, तो वी कैन जस्ट अटैच अ मैग्नेट विद दिस प्रोटीन। इस प्रोटीन ने उस मैग्नेट से अटैच हो जाना है और उसने इसको बाहर निकाल के इसको पुल डाउन करके उसमें से सारे उसमें से सोल्यूशन में से बाहर निकालना और आवर प्रोटीन विल बी प्यूरिफाइड। सो दिस इज a short overview of we basically how we basically purify the proteins. Okay. So there are many techniques by which we can separate different proteins. We can do many experiments. Some are biochemical, some are only chemical, some are only biological. So हम उन सब टेक्निक्स में से जो कि हम आगे इस कोर्स में पढ़ेंगे, उनमें से एक टेक्निक की आज डिस्कस करेंगे, दैट इज chromatography, and a type of chromatography that is called the affinity chromatography. So there are many types of chromatographies that are used for this protein purification process. So we'll be dealing with affinity chromatography today. So होता क्या है कि जब हमारी प्रोटीन बन रही होती है इन जेनेटिक सीक्वेंस, हम ऐसा सीक्वेंस ऐड करते हैं कि that is that behaves as a tag for affinity chromatography. No, for example, if this is our protein A, this is the gene sequence of protein A, we add a small tag, I have to make it rather small, a small tag that is basically we add the gene sequence of multiple histidines, that is an amino acid, normally 6 to 12. I'm going to add 1 2 3 4 5 and 6 histidines. So when bacteria performs this the central dogma, the transcription translation, this protein is formed. So if this is the protein, so it has a specific polyhistidine tag. Now there are there are two ways to do this. One way is to do it like this by adding sequences in the gene while performing PCR and stuff, and the other one is कि आप इसको छोड़े और जो आप वेक्टर लेते हैं, द बेस्ट एंड एफिशिएंट वे इज कि आप इसको छोड़े और आप जो वेक्टर लेते हैं, द प्लाज्मिड वेक्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इन प्रीवियस लेक्चर, जब आप उसमें रिस्ट्रिक्ट करवाते हैं अपनी जीन को, दिस इज द जीन, आई एम गोना चेंज द कलर, दिस इज द जीन। ओके, होता क्या है कि उस वेक्टर की अपनी प्रॉपर्टी होती है कि उसके अंदर समटाइम्स देयर आर histidine tags already present. So हम क्या करते हैं कि we restrict the vector from here, first from here and here to add the gene, and then after the restriction is the ligation is performed and the gene is inserted into a vector. What we do is we cut the vector not from here now but from another side. Now after performing this experiment, हम जब इसको cleave करते हैं from a vector, so what we get is we get the protein with the histidine tag, both. This is the histidine tag and this is the protein P plus the tag. Okay, so this is the another more efficient way. So हमने इस बैक्टीरिया में जब लाइगेट करवा दिया, the bacteria makes this protein, the bacteria ने ये प्रोटीन बनाई है, तो that protein, that is a recombinant protein, will have two parts. Number one will be the protein and second one will be the tag. Now this tag
will only be attached to the recombinant protein that we want to clone, yeah, we want to purify. Okay, so this is the protein, the recombinant protein, and this is the tag. So P plus X, this X is the tag. ठीक है, so this is our protein. अब बैक्टीरिया में जब और बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, हमने उसके ओके, सो हमने वो ट्यूब ली इन विच वी परफॉर्म द लाइसिस एंड स्टफ, और हमने वो बैक्टीरिया की सेल वॉल को, सेल मेम्ब्रेन को ब्रेकअप किया, तो वहां पे हमारे पास बहुत सारी प्रोटीन्स आ गई, राइट? सो वहां पे एक प्रोटीन दैट विल बी डिफरेंट, एंड दैट विल बी आवर प्रोटीन, एंड दैट प्रोटीन हैज द हिस्टिडीन टैग इन इट. अब हमने क्या करना है कि इस सारे सोल्यूशन में से इस हिस्टिडीन टैग को बेसिकली प्यूरिफाई करना है. सो टू डू दैट व्हाट वी डू इज वी यूज निकल. ठीक है, सो निकल इज लाइक अ मैग्नेट टू हिस्टिडीन. ठीक है, द हिस्टिडीन अलाइन देमसेल्व्स इन such a way that they make a कॉम्प्लेक्स विद द निकल. और ऐसे ही है कि जैसे हमने एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, उसके अंदर हमने एक हुक डाली है टू कैच द फिश. वो फिश, उस फिश ने उसको निकल को, द हिस्टिडीन, द फिश दैट हैज हिस्टिडीन विल bite the nickel, because only that fish will see the nickel which has the histidine tag in it. So the histidine tag fish would attach to the nickel, and we can just pull the nickel out, and the fish will come out as well with the histidine tag. So the fish is our protein in this example. ठीक है, so हम क्या करते हैं कि हम निकल को खींचते हैं, और निकल को खींचने से क्या होता है कि जब निकल, क्योंकि हमारी प्रोटीन के साथ लगा हुआ है, सो वी पुल डाउन निकल, सॉरी हिस्टिडीन टैग हमारी प्रोटीन के साथ लगा हुआ है, पुल डाउन निकल, एंड द हिस्टिडीन टैग विल अटैच टू द निकल, एंड हिस्टिडीन टैग इज आल्सो अटैच्ड टू द प्रोटीन, सो हमारी प्रोटीन के साथ आ जाती है. सो इस हिस्टिडीन टैग के साथ हमारी प्रोटीन लगी है. After performing the chromatography, this affinity chromatography, this is the affinity tag basically. This histidine tag is affinity tag. So after performing the chromatography, we get the protein out of that amalgam of protein, the solution of protein, and we get our protein purified. Okay, so I'm gonna show you the diagram in which the stepwise this stepwise process is explained. So this is the vector. This is the DNA protein with the histidine tag. It is ligated into another vector. अब इसके अंदर इन्होंने they have added, okay, so this vector already has a histidine tag. They have added the protein in such a way that the protein is before histidine tag and it attaches with the histidine tag during the cloning process. Okay, so it is inserted to the cell. The cells have made the proteins, इनको अपने the protein का mixture बनाया, and then you pass it to the nickel column, the chromatography column that has nickel attached to the column, attached to it. So अब जब ये जो प्रोटीन जब नीचे जा रही है, ओनली दोज प्रोटीन्स हु हैव द हिस्टिडीन टैग विल अटैच टू द column, बाकी सारी पास आउट हो जाएंगी, राइट? सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम 1 2 3, in the diagram 2, as you can see, only the only the proteins that have histidines attached to it will reside into the column that has nickel on it. All the other proteins will pass through the column and reach the bottom of the beaker. ठीक है, और उसके बाद what you have to do now, protein with the proteins with histidine tags are attached to the column with the nickel. अब हमने इसको filter out करना है. So what we do is we'll add a competitive and we'll add a competitor molecule, the imidazole, which will clean the basically column, and the histidine tag protein will come out of the column into the solution, and our protein that is histidine tag will be purified from all other proteins. So this is a very simple technique, and rather a technique that is used very commonly in different labs of different institutes. So this is a very you can say very handy and a technique that has very good results in solving this protein purification question. So we will be studying this technique in detail in the later lectures, and we will study other techniques as well. We get a graph out of this technique, and we will be studying those graphs, and along with other purification techniques in the subsequent lectures. So till then, goodbye.